हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 27। पुराने चैप्टर्स और आने वाले चैप्टर्स अगर आ चुके हैं तो वो लिंक्ड होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डू चेक देम। उसके अलावा मेरी वेबसाइट पे मैं काफी कुछ अपलोड कर रही हूँ रिगार्डिंग चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, तो वो भी चेक कर लेना। नाउ लेट्स गो। माइक टीवी इज सेंट बाय टेलीविजन। माइक टीवी भेजा गया टेलीविजन के थ्रू। Mike TV was even more excited than Grandpa Joe at seeing a bar of chocolate being sent by television. But Mr. Wonka, he shouted, can you send other things through the air in the same way? Breakfast cereal, for instance. Oh, my scented aunt, cried Mr. Wonka. Don't mention that disgusting stuff in front of me. Do you know what breakfast cereal is made of? It's made of all those little curly wooden shavings you find in pencil sharpeners. But could you send it by television if you wanted to, as you do chocolate? Asked Mike TV. Of course, I could. माइक टीवी जो है वो ग्रैंडपा जो से भी ज्यादा एक्साइटेड था जब उसने एक बार ऑफ चॉकलेट को देखा कि वो भेजी गई टेलीविजन के थ्रू। तो उसने चिल्लाया, पर मिस्टर वोंका, क्या आप दूसरी चीजें भी हवा में भेज सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल? ओह मेरी मुकद्दस आंटी, मिस्टर वोंका ने कहा, उस गंदी सी चीज का नाम मेरे सामने मत लेना। तुम्हें पता है वो किस चीज से बना होता है? ब्रेकफास्ट सीरियल की बात हो रही है। वो जो है पेंसिल की, जो हम पेंसिल शॉर्प करते हैं उसका जो कचरा होता है ना, वुडन शेविंग्स, उससे बना हुआ है। पर क्या आप उसे भेज सकते हैं टेलीविजन के थ्रू जैसे आपने एक चॉकलेट भेजी? हाँ बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट पीपल? आस्क्ड माइक टीवी। कुड यू सेंड अ रियल लाइव person from one place to another in the same way? A person? Cried Mr. Wonka. Are you off your rocker? But could it be done? Good heavens, child, I really don't know. I suppose it could. Yes, I'm pretty sure it could. Of course it could. I wouldn't like to risk it though. It might have some nasty results. और माइक टीवी ने पूछा, और लोगों का क्या? क्या आप एक जिंदा असली इंसान को एक जगह से दूसरी जगह इसी तरीके से भेज सकते हो? एक इंसान? मिस्टर वोंका ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? अब माइक टीवी कह रहा है, पर क्या ये हो सकता है? गुड हेवंस बच्चे, मुझे नहीं पता। शायद, मैं सोचता हूँ ऐसा हो सकता है। हाँ, मुझे यकीन है ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इस चीज को रिस्क नहीं करूंगा क्योंकि रिजल्ट्स काफी बुरे हो सकते हैं। इसका जो आउटकम है, यानी आप वहां से जो शिफ्ट हो गए यहां से वहां, तो कुछ बुरा हो सकता है उस प्रोसेस में। But Mike TV was already off and running. The moment he heard Mr. Wonka saying, I'm pretty sure it could, of course it could, he turned away and started running as fast as he could towards the other end of the room where the great camera was standing. Look at me, he shouted as he ran. I am going to be the first person in the world to be sent by television. No, 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 cried Mr. Wonka. Mike, screamed Mrs. TV. Stop! Come back! You will be turned into a million tiny pieces. पर माइक टीवी तब तक भागने लग गया। जैसे ही उसने सुना मिस्टर वोंका को ये कहते हुए कि हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और आगे वो बोल रहे थे ना कि रिजल्ट्स बुरे हैं, वो उसने सुना ही नहीं। बस वो मुड़ा और भागने लग गया जितनी तेजी से वो भाग सकता था, कमरे के दूसरे कोने पे जहां पे कैमरा रखा हुआ है। मुझे देखो, उसने चिल्लाया जब वो भाग रहा था। मैं पहला बंदा हूंगा दुनिया का जो टेलीविजन के थ्रू भेजा जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मिस्टर वोंका ने कहा। माइक, स्क्रीम किया मिसेस टीवी ने, चिल्लाया, रुक जाओ, वापस आओ, तुम्हारे जो है मिलियन टाइनी पीसेस हो जाएंगे। But there was no stopping Mike TV now. The crazy boy rushed on, and when he reached the enormous camera, he jumped straight for the switch, scattering Oompa Loompas right and left as he went. See you later, alligator, he shouted, and he pulled down the switch. And as he did so,
he leaped out into the full glare of the mighty lens. There was a blinding flash. Then there was silence. पर अब माइक टीवी को रोका नहीं जा सकता था। जो पागल सा बच्चा था वो जल्दी जल्दी भागता जा रहा था और वो कैमरा तक पहुंच गया और उसने जल्दी से स्विच की तरफ जंप किया। उम्पा लुम्पास इधर उधर गिरे, इधर उधर स्कैटर हो गए, फैल गए। बाद में मिलते हैं, एलिगेटर चिल्लाया माइक टीवी ने और उसने स्विच को पुल कर दिया, नीचे खींचा और जैसे ही उसने ये किया उसने जंप करके माइटी लेंस, जो बड़ा सा लेंस था, उसके ग्लेयर पे आ गया, उसके नीचे आ गया। वहां पे एक अंधा करने वाला फ्लैश आया और फिर खामोशी। Then Mrs. TV ran forward, but she stopped dead in the middle of the room, and she stood there. She stood staring at the place where her son had been, and her great red mouth opened wide, and she screamed, "He is gone! He is gone! Great heavens! He has gone!" shouted Mr. TV. Mr. Wonka hurried forward and placed a hand gently on Mrs. TV's shoulder. "We shall have to hope for the best," he said. "We must pray that your little boy will come out unharmed at the other end." फिर मिसेस टीवी जो है वो जल्दी जल्दी आगे गई, लेकिन रुक गई बिल्कुल कमरे के दरमियान में और वहां खड़ी रही उस जगह को घूरते हुए जहां उनका बेटा था। और उनका बड़ा सा मुंह जो है, लाल मुंह, वो खुला और उन्होंने चिल्लाया, "वो चला गया, वो चला गया!" अब मिस्टर टीवी ने भी चिल्लाया, "ओ खुदाया ही, वो तो चला ही गया!" अब मिस्टर टीवी ने भी चिल्लाया, "ग्रेट हेवंस, वो तो चला ही गया!" मिस्टर वोंका जल्दी जल्दी आ गया है और उन्होंने अपना हाथ जो है वो जेंटली आराम से मिसेस टीवी के कंधे पे रखा और कहा, "हमें उम्मीद करनी चाहिए अच्छे के लिए। हमें दुआ करनी चाहिए कि आपका छोटा बच्चा बाहर आए बिना किसी नुकसान के, दूसरे एंड से, दूसरी जगह से वो बिना किसी नुकसान के बाहर आ जाए, इसलिए दुआ करनी चाहिए हमें।" अब इस पिक्चर में क्या हो रहा है, वो ऊपर जो लाइट्स वगैरह वो हैं और मिस्टर वोंका जो है मिसेस टीवी के कंधे पे हाथ रखे हुए हैं। मिसेस टीवी कह रही है, "चला गया!" मिस्टर टीवी भी वहां साइड पे खड़े हैं। तो हाँ, "Mike!" screamed Mrs. TV, clasping her head in her hands. "Where are you?" "I will tell you where he is," said Mr. TV. "He is whizzing around above our heads in a million tiny pieces." "Don't talk about it," wailed Mrs. TV. "We must watch the television set," said Mr. Wonka. "He may come through any moment." Mr. and Mrs. TV and Grandpa Joe and little Charlie and Mr. Wonka all gathered round the television and stared tensely at the screen. The screen was quite blank. "He is taking a heck of a long time to come across. He is taking a heck of a long time to come across," said Mr. TV, wiping his brow. "माइक!" चिल्लाया मिसेस टीवी ने, अपना सर जो है उसको पकड़ते हुए अपने हाथों से। "कहाँ हो तुम?" "मैं बताता हूँ वो कहाँ है," मिस्टर टीवी ने कहा। "मैं बताता हूँ वो कहाँ है। वो हमारे सर के ऊपर मिलियंस ऑफ टाइनी पीसेस में जा रहा है." "इसके बारे में बात मत करो," गम में मिसेस टीवी ने कहा, थोड़ा रोने की तरीके से। "हमें टेलीविजन सेट देखना चाहिए," मिस्टर वोंका ने कहा। "वो वहां से कभी भी आ सकता है." मिस्टर, मिसेस टीवी और ग्रैंडपा जो और चार्ली और मिस्टर वोंका सब लोग टीवी के आसपास आए, जमा हुए और बेचैनी से शिद्दत से स्क्रीन को देखने लगे। स्क्रीन जो है वो काफी खाली थी। मिस्टर टीवी ने कहा, "ये तो काफी ज्यादा टाइम ले रहा है आने में." अपना ब्राउ जो है उसको वाइप करते हुए, साफ करते हुए, थोड़ा पसीना आ गया होगा तो उसको साफ करते हुए कह रहे, "ये तो काफी टाइम ले रहा है." Oh dear, said Mr. Wonka. "I do hope that no part of him gets left behind." "What on earth do you mean?" asked Mr. TV sharply. ओह, मिस्टर वोंका ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि उसका कोई भी हिस्सा रह न जाए." "तुम्हारा मतलब क्या है?" मिस्टर टीवी ने पूछा। "I don't wish to alarm you," said Mr. Wonka, "but it does sometimes happen that only about half the little pieces find their way into the television set.
It happened last week. I don't know why, but the result was that only half a bar of chocolate came through. मैं आपको तंग नहीं करना चाहता, खतरे की बात नहीं बताना चाहता, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि सिर्फ आधे पीसेस आ पाते हैं, राइट? एक जगह से जाके दूसरी साइड सिर्फ आधे पीसेस आते हैं। पिछले हफ्ते ऐसा हुआ था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जो रिजल्ट था वो ये था कि हमारे पास सिर्फ आधी चॉकलेट बार आई थी। ये मिस्टर वोंका बता रहे हैं। Mrs. Stevie let out a scream of horror. You mean only half of Mike is coming back to us, she cried. Let's hope it's the top half, said Mr. TV. Hold everything, said Mr. Wonka. Watch the screen. Something is happening. The screen had suddenly begun to flicker. Then some wavy lines appeared. Mr. Wonka adjusted one of the knobs and the wavy lines went away. And now, very slowly, the screen began to get brighter and brighter. Mrs. TV ने एक खतरनाक और खौफ वाली चीख निकाली और उन्होंने कहा, आपका मतलब है कि सिर्फ आधा माइक आ रहा है हमारे पास? मिस्टर टीवी ने कहा, उम्मीद करते हैं कि वो ऊपर वाला आधा हिस्सा हो। सब रोक दो, मिस्टर वोंका ने कहा, स्क्रीन को देखो, कुछ हो रहा है। फिर स्क्रीन जो है वो फ्लिकर करने लगी, टिमटिमाने लगी और फिर जो है कुछ लहराती हुई लाइंस आईं स्क्रीन पे। फिर मिस्टर वोंका ने नॉब्स को जो है एक नॉब को हिलाया, एडजस्ट किया, सही किया, तो लाइंस जो थी वो चली गईं और अब बहुत ही आराम से स्क्रीन जो है वो रोशन होना शुरू हो रही थी। तो थोड़ी थोड़ी पहले थोड़ी सी, फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लग गई थी वहां से रोशनी। Here he comes, yelled Mr. Wonka. Yes, that's him, all right. Is he all in one piece? Cried Mrs. TV. I'm not sure, said Mr. Wonka. It's too early to tell. Faintly at first, but becoming clearer and clearer every second. The picture of Mike TV appeared on the screen. He was standing up and waving at the audience and grinning from ear to ear. But he is a midget, shouted Mr. TV. Mike, cried Mrs. TV. Are you all right? Are there any bits of you missing? Isn't he going to get any bigger? Shouted Mr. TV. वहां वो आ गया, हाँ ये वही है, मिस्टर वोंका ने चिल्लाया, यल किया, जोर से बोला। क्या वो एक ही पीस में है? मिसेस टीवी ने कहा। मुझे नहीं पता, ये अभी नहीं बताया जा सकता, अभी बहुत जल्दी है, मिस्टर वोंका ने कहा। पहले हल्का हल्का मध्यम सा, लेकिन फिर क्लियर होने लगा, साफ होने लगा हर सेकंड कि माइक टीवी की पिक्चर आ रही है स्क्रीन पर। ठीक है, वो वहां अपेयर हो गई। वो वहां खड़ा था और वेव कर रहा था, हाथ हिला रहा था ऑडियंस को, सब लोगों को, और स्माइल कर रहा था बहुत ही बड़ी सी। पर वो तो एक मिजट है, पर वो तो एक बोना है, चिल्लाया मिस्टर टीवी ने। माइक, मिसेस टीवी ने कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारा कोई पीस मिसिंग है क्या? मिस्टर टीवी ने चिल्लाया, क्या ये बड़ा नहीं होगा? Talk to me, Mike, cried Mrs. TV. Say something. Tell me you are all right. A tiny little voice, no louder than the squeaking of a mouse, came out of the television set. Hi, Mum, it said. Hi, Pop. Look at me. I'm the first person ever to be sent by television. Mrs. TV ने कहा, मुझसे बात करो माइक, कुछ तो बोलो, बताओ कि तुम ठीक हो। फिर एक छोटी सी वॉइस, माउस के वॉइस जो स्क्विकिंग होती है ना, जो भी इनकी आवाज होती है, उससे बड़ी नहीं आई टेलीविजन सेट में से। उसने कहा, हाय मम्मी, हाय पापा, मुझे देखें, मैं पहला बंदा हूं जो कि टेलीविजन के थ्रू भेजा गया। Grab him, ordered Mr. Wonka. Quick! Mrs. TV shot out a hand and picked the tiny figure of Mike TV out of the screen. Hooray! Cried Mr. Wonka. He is all in one piece. He is completely unharmed. You call that unharmed? Snapped Mrs. TV, peering at the little speck of a boy who was now running to and fro across the palm of her hand.
waving his pistols in the air. He was certainly not more than an inch tall. He's shrunk, said Mr. TV. Of course he's shrunk, said Mr. Wonka. What did you expect? मिस्टर वोंका ने कहा उसको उठा लो जल्दी। मिसेस टीवी ने अपना हाथ बढ़ाया और छोटी सी फिगर जो है माइक टीवी की उसको उठा के स्क्रीन में से बाहर लाया। हुर्रे, ये तो एक ही पीस में आ गया, ये बिल्कुल अनहार्म्ड है, इसे कोई नुकसान नहीं हुआ, मिस्टर वोंका ने कहा। मिसेस टीवी ने कहा, तुम कहते हो ये नुकसान नहीं है? उस छोटे बच्चे को, जो छोटा सा उसका बेटा था, उनको झांकते हुए जो उनके हाथ पे हथेली पे इधर उधर भाग रहा था और अपनी पिस्टल को हवा में लहरा रहा था। वो 1 इंच से बड़ा नहीं था। मिस्टर टीवी ने कहा, ये सुकड़ गया है। हाँ बिल्कुल ये सुकड़ गया है, मिस्टर वोंका ने कहा। आपको क्या लगा था क्या होगा? This is terrible, wailed Mrs. TV. What are we going to do? And Mr. TV said, we can't send him back to school like this. He will get trodden on. He will get squashed. He wouldn't be able to do anything, cried Mrs. TV. Oh, yes I will, squeaked the tiny voice of Mike TV. I will still be able to watch television. Mrs. TV थोड़ा सा गम में बोली, ये तो बहुत ही बुरा है, अब हम क्या करेंगे? और मिस्टर टीवी ने कहा, इसको हम ऐसे स्कूल तो नहीं भेज सकते, ये रौंद दिया जाएगा, ये तो कुचला जाएगा। उसके बाद मिसेस टीवी थोड़ा सा रोने में और थोड़ा जोर से बोलती है, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ मैं बिल्कुल कर पाऊंगा, छोटी सी आवाज में माइक टीवी ने कहा। मैं अभी भी टीवी देख सकता हूं। अब यहाँ पे पिक्चर है, मिसेस टीवी है, उनके हाथ पे कौन है? माइक टीवी। Never again, shouted Mr. TV. I am throwing the television set right out the window the moment we get home. I have had enough of television. When he heard this, Mike TV flew into a terrible tantrum. He started jumping up and down on the palm of his mother's hand, screaming and yelling and trying to bite her fingers. I want to watch television, he squeaked. I want to watch television. I want to watch television. I want to watch television. दोबारा कभी नहीं, मिस्टर टीवी ने चिल्लाया। हम जैसे ही घर पहुंचेंगे मैं हमारा टीवी जो है खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। मेरी बस हो गई है टीवी से। अब जब ये सुना तो माइक टीवी जो है गुस्से में आ गया और उसने उछलना शुरू कर दिया ऊपर नीचे अपनी अम्मी की हथेली पर। रो रहा था, चिल्ला रहा था, उनकी जो फिंगर्स हैं उसको भी बाइट कर रहा था और कह रहा था, मुझे टीवी देखना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे टीवी देखना है, मैं टीवी देखना चाहता हूँ। तो he was trying to tell everyone, मैं टीवी देखना चाहता हूँ। Here, give him to me, said Mr. TV, and he took the tiny boy and shoved him into the breast pocket of his jacket and stuffed a handkerchief on top. Squeals and yells came from inside the pocket, and the pocket shook as the furious little prisoner fought to get out. Oh, Mr. Wonka, wailed Mrs. TV, how can we make him grow? Well, said Mr. Wonka, stroking his beard and gazing thoughtfully at the ceiling, I must say that's a wee bit tricky. But small boys are extremely springy and elastic. They stretch like mad. So what we will do, we will put him in a special machine I have for testing the stretchiness of chewing gum. Maybe that will bring him back to what he was. इधर मुझे दो, मिस्टर टीवी ने कहा मिसेस टीवी को, और उन्होंने छोटे बच्चे को उठाया और अपनी पॉकेट, जो जैकेट की जो ऊपर वाली पॉकेट होती है ना, उसमें डाल दिया उसको, और उसके ऊपर हैंडकरचीफ, रुमाल जो है उसको डाल दिया। तो अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, ठीक है, पॉकेट में से। और पॉकेट जो है उसके अंदर जो छोटा सा प्रिजनर था, कैदी था गुस्से वाला, वो लड़ रहा था कि मुझे बाहर आना है, ठीक है, बाहर आने के लिए लड़ रहा था। ओह मिस्टर वोंका, थोड़ा गम में मिसेस टीवी ने कहा, हम क्या करें, हम इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं? वेल, मिस्टर वोंका ने कहा, अपनी दाढ़ी को ना हाथ लगाते हुए और उसको ठीक करते हुए, स्ट्रोक करते हुए और छत को देखते हुए, घूरते हुए,
सोचने वाले उसमें। हाँ, ये थोड़ा सा नाजुक तो है थोड़ी सिचुएशन, पर छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज्यादा स्प्रिंगी होते हैं, लचकदार होते हैं। वो बहुत ही पागलों की तरह खींचते जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक स्पेशल मशीन जो कि मेरे पास है टेस्ट करने के लिए, च्युइंगम की स्ट्रेचनेस, उसका खिंचाव टेस्ट करने के लिए है, तो उसमें हम इसको डालेंगे। शायद वो इसको जैसा वो था वैसा बना दे। Oh, thank you, said Mrs. Teavee. Don't mention it, dear lady. How far do you think he will stretch? Asked Mr. Teavee. Maybe miles, said Mr. Wonka. Who knows? But he is going to be awfully thin. Everything gets thinner when you stretch it. You mean like chewing gum? Asked Mr. Teavee. Exactly. How thin will he be? Asked Mrs. Teavee anxiously. ओह शुक्रिया, मिसेस टीवी ने कहा। कोई बात नहीं है डियर लेडी, कोई बात नहीं है। मिस्टर वोंका ने कहा, आपको क्या लगता है ये कितना स्ट्रेच होगा? मिस्टर टीवी ने पूछा। शायद मीलों तक। क्या पता, किसको पता, मिस्टर वोंका कह रहे हैं। पर ये काफी थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। हर चीज जिसको खींचा जाता है वो पतली हो जाती है। च्युइंगम की तरह? मिस्टर टीवी ने पूछा। बिल्कुल। कितना पतला होगा ये? मिसेस टीवी ने परेशानी से पूछा। I haven't the foggiest idea, said Mr. Wonka. And it doesn't really matter anyway, because we will soon fatten him up again. All we will have to do is give him a triple overdose of my wonderful super vitamin chocolate. Super vitamin chocolate contains huge amounts of vitamin A and vitamin B. It also contains vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin F, vitamin G, vitamin I, vitamin J, vitamin K, vitamin L, vitamin M, vitamin N, vitamin O, vitamin P, vitamin Q, vitamin R, vitamin T, vitamin U, vitamin V, vitamin W, vitamin X, vitamin Y, and believe it or not, vitamin Z. The only two vitamins it doesn't have in it are vitamin S because it makes you sick, and vitamin H because it makes you grow horns on the top of your head like a bull. But it does have in it a very small amount of the rarest and most magical vitamin of them all, vitamin Wonka. मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन वो मैटर भी नहीं करता, यानी उसके कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको दोबारा मोटा कर देंगे। हमें इसको सिर्फ ओवरडोज करना होगा मेरी सुपर विटामिन चॉकलेट पे। उसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं। ए से लेके जी में से सिर्फ 2 विटामिन्स हैं जो उसमें नहीं हैं, एस और एच। वो कह रहे हैं कि एस जो है वो आपको बीमार कर देता है, एच जो है वो आपके सर पे हॉर्न्स, सींग उगाता है बुल की तरह, तो इसलिए वो दोनों नहीं हैं। लेकिन उसमें एक छोटी सी अमाउंट है बहुत ही नायाब और मैजिकल जादुई विटामिन की, वो है विटामिन वोंका। And what will that do to him? Asked Mr. TV anxiously. It will make his toes grow out until they are as long as his fingers. Oh, no! Cried Mrs. TV. Don't be silly, said Mr. Wonka. It's most useful. He will be able to play the piano with his feet. But Mr. Wonka, और वो इसके साथ क्या करेगा? मिस्टर टीवी ने कहा, उस पे क्या करेगा? विटामिन वोंका की बात हो रही है। वो उसके जो पैर के जो टोज होते हैं ना हमारे, उनको फिंगर्स, उंगलियों जितना लंबा कर देगा, हाथ की उंगलियों जितना। अरे नहीं, चिल्लाया मिसेस टीवी ने। पागल मत बनो, मिस्टर वोंका ने कहा, ये बहुत ही काम का है। इससे माइक जो है वो पियानो बजा सकता है अपने पैरों से। पर मिस्टर वोंका, No arguments, please, said Mr. Wonka. He turned away and clicked his fingers 3 times in the air.
An Oompa Loompa appeared immediately and stood beside him. "Follow these orders," said Mr. Wonka, handing the Oompa Loompa a piece of paper on which he had written full instructions. "And you will find the boy in his father's pocket. Off you go. Goodbye, Mr. TV. Goodbye, Mrs. TV. And please don't look so worried. They all come out in the wash. You know, every one of them." At the end of the room, the Oompa Loompas around the giant camera were already beating their tiny drums and beginning to jog up and down to the rhythm. "There they go again," said Mr. Wonka. "I'm afraid you can't stop them singing." "कोई बहस नहीं, प्लीज," मिस्टर वोंका ने कहा। उसके बाद वो मुड़े और उन्होंने 3 दफा अपनी फिंगर्स क्लिक की हवा में और उम्पा लुम्पा एक आ गया फौरन से और उनके साथ आके खड़ा हो गया। "ये ऑर्डर्स फॉलो करो," मिस्टर वोंका ने कहा, उसको एक पेपर पकड़ाते हुए जिसमें उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी थी कि क्या क्या करना है। "तुम्हें बच्चा जो है, लड़का जो है, वो उसके अब्बू की पॉकेट में मिलेगा। चलो जाओ। गुड बाय मिस्टर टीवी, गुड बाय मिसेस टीवी, आप लोग सब जाएं और प्लीज इतने परेशान मत दिखें। ये सब धुलाई में वापस आ जाएंगे। आपको पता है, हर एक आ जाएगा।" कमरे के आखिर में जो उम्पा लुम्पास जो जाइंट से कैमरा के साथ थे, वो सब ऑलरेडी अपने ड्रम्स को बीट कर रहे थे, बजा रहे थे और ऊपर नीचे हो रहे थे रिदम से। मिस्टर वोंका ने कहा, "अब ये दोबारा शुरू हो गए। मुझे डर है कि आप इनको सिंगिंग से नहीं रोक सकते।" मिस्टर वोंका ने कहा, "अब ये देखो, ये सारे उम्पा लुम्पा से कैमरा के साथ जो कि अब डांस कर रहे हैं." Little Charlie caught Grandpa Joe's hand, and the two of them stood beside Mr. Wonka in the middle of the long, bright room, listening to the Oompa Loompas. And this is what they sang. छोटा उम्पा लुम्पा जो है, छोटा चार्ली जो है, उसने ग्रैंडपा जो का हाथ पकड़ा और वो दोनों मिस्टर वोंका के साथ कमरे के दरमियान में खड़े थे और उम्पा लुम्पा को सुन रहे थे। ये उन्होंने गाया। "The most important thing we have learned, so far as children are concerned, is never, never, never let them near your television set. Or better still, just don't install the idiotic thing at all. In almost every house we have been, we have watched them gaping at the screen. They loll and slop and lounge about and stare until their eyes pop out. Last week in someone's place we saw a dozen eyeballs on the floor. They sit and stare and sit until they are hypnotized by it, until they are absolutely drunk with all that shocking, ghastly junk. Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the window sill. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think, to wonder just exactly what this does to your beloved tot? It rots the senses in the head. It kills imagination dead. It clogs and clutters up the mind. It makes a child so dull and blind. He can no longer understand a fantasy, a fairyland. His brain becomes as soft as cheese. His powers of thinking rust and freeze. He cannot think, he only sees. All right, you will cry, all right, you will say, but if we take the set away, what shall we do to entertain our darling children? Please explain. We will answer this by asking you, what used the darling ones to do? How used they keep themselves contented before this monster was invented? Have you forgotten? Don't you know? We will say it very loud and slow. They used to read. They would read and read and read and read and then proceed to read some more,
Great Scott, gadzooks! One half their lives was reading books. The nursery shelves had books galore. Books cluttered up the nursery floor. And in the bedroom by the bed, more books waiting to be read. Such wondrous, fine, fantastic tales of dragons, gypsies, queens, and whales, and treasure isles and distant shores, where smugglers rowed with muffled oars, and pirates wearing purple pants, and sailing ships and elephants, and cannibals crouching round the pot, stirring away at something hot. It smells so good, what can it be? Good gracious, it's Penelope. The younger ones had Beatrix Potter, with Mr. Todd the dirty rotter, Pigling Bland, and Mrs. Tiggy Winkle, and just how the camel got his hump, and the monkey lost his rump, and Mr. Todd and bless my soul, there's Mr. Rat and Mr. Mole. Oh, books! What books they used to know! Those children living long ago. So please, oh please, we beg, we pray, go through your TV set away. And in its place you can install a lovely bookshelf on the wall, then fit the shelves with lots of books, ignoring all their dirty looks, the screams and yells, the bites and kicks, and children hitting you with sticks. Fear not, because we promise you that in about a week or two of having nothing else to do, they will now begin to feel the need of having something good to read. And once they start, oh boy, you watch the slowly growing joy that fills their heart. They will grow so keen, they will wonder what they had ever seen in that ridiculous machine, that nauseating, foul, unclean, repulsive television screen. And later each and every kid will love you more for what you did. P.S. Regarding my TV, we very much regret that we shall simply have to wait and see if we can get him back his height. But if we can't, it serves him right. And that's it. अच्छा, इस पूरे गाने में सिर्फ वो कह रहे हैं कि भाई टीवी गंदी है, टीवी हमें नहीं चाहिए। पता है कि बच्चे बिजी हो जाते हैं और आप लोग काम कर सकते हैं, वो अम्मी अब्बू को तंग नहीं करते और लोगों को तंग नहीं करते। लेकिन उसकी जगह पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग किताबें पढ़ते थे। तो अब भी बच्चों को किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि टीवी भले देखने में अच्छी लगती है पर आपका दिमाग खराब कर देती है। आपको फिर चीजें इमेजिनेशन नहीं रहती, आप अलग अलग चीजें नहीं सोच पाते और आपके दिमाग को वो जंग लगा देती है। तो किताबें पढ़नी चाहिए। चलो उस टीवी को फेंक दो और किताबें ले आओ। सब बच्चों को किताबें पढ़नी चाहिए। पहले तो वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, गुस्सा होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो किताबों की तरफ बढ़ेंगे और फिर वो सोचेंगे कि मैं टीवी में क्या देखता था, ये किताबें तो इतनी अच्छी हैं, राइट। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि माइक टीवी के लिए हमें बहुत अफसोस है, पर अब हम सिर्फ देख सकते हैं और रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कि क्या हम उसको उसकी हाइट पे ला सकते हैं या नहीं। अगर नहीं ला सकते तो मतलब उसके साथ तो ऐसा ही होना था। ये उम्पा लुम्पा कह रहे हैं, मैं नहीं। ओके, and that's it for this video. I really hope आपको वीडियो अच्छी लगी। If लगी तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share. मेरा पर्सनल चैनल और इंस्टाग्राम सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, तो डू चेक इट। ओके, बाय।